कभी कोई रॉन्ग फेवर अपने लिए भी नहीं करते थे या अपनी फैमिली के लिए या किसी क्लोज आदमी के लिए. ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन दिस कि मुस्लिम या हिंदू या सिख या क्रिश्चियन. His message was to all youth of the country. He might be from any religion. कंघा एक हमेशा हाँ वो उनके साथ जरूर रहता था. तो मैंने तो बस वही देखा, वरना कोई ना हेयर स्टाइलिस्ट को देखा. आज एपीजे कलाम साहब की पुण्यतिथि है और हमारी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है. सर आप प्लीज़ बैठिए कि आज हमारे बीच में एसएम खान साहब हैं जिन्होंने डॉक्टर एपीजे कलाम साहब के विचारों को बहुत नज़दीक से देखा है और आपकी कई पहचानें हैं. आप प्रेस सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं, डीजी रहे हैं प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में. इसके अलावा भी बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं एसएम खान साहब की. आज हमने एसएम खान साहब को इनवाइट किया कि वो डॉक्टर एपीजे कलाम साहब को जितना याद किया जाए वो कम है और इनसे बेहतर कौन शख्सियत हो सकती है जो हमारे सवाल हैं एपीजे कलाम साहब से जुड़े हुए उनको जवाब दें. सर बहुत बहुत स्वागत है, खैर मकदम है आपका. Thank you. Actually, I wanted to present this book Sir. to you and your team. जी जी. This is a book which I have written on Dr. Kalam. So we'll keep this in our library, sir, Yeah. so that everybody can read this. People's President बहुत मशहूर किताब है सर की. प्लीज सर. सर सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहूँगा कि आपने एक लंबे अरसे के साथ डॉक्टर साहब एपीजे कलाम साहब के साथ काम किया है. आपका काफ़ी एक्सपोजर रहा है, आपने इनके विचारों को जाना है. हम आपसे जानना चाहेंगे सर कि आपकी जो शख्सियत है, जो आपकी पर्सनैलिटी है, उस पे कलाम साहब का क्या इन्फ्लुएंस पड़ा? Very relevant question. Actually, Dr. Kalam became President of India on 25th July 2002. And I joined him on 7th August 2002, like 12 days after. And during my first meeting with Dr. Kalam at 3:30 p.m., it was almost the same time, that was 7th August 2002. That was my first meeting with him after I joined his office. And so in the very first meeting, he told me, which I have written in this book also, that this was about a half an hour meeting with him, the very first briefing meeting, where he himself briefed me what is his mandate, what he wants to do, and what should be my role there. So he made it very clear that I want to make it a people's place, not palace, but place, and where everybody should be able to come and put forth their views and grievances or whatever before the president and his staff, his officers, and officers should behave in the similar manner. क्योंकि कई बार ये होता है ना कि bureaucrats become more bureaucratic than the head, than the minister or prime minister or president. So he wanted to make it very clear that you all have to be very accessible to people, and you have to attend people and attend to their problems, grievances. This he told to everybody who was working with him, like other officers also. So this was the impact which he left from the very beginning about the accessibility, transparency, and simplicity and humility, which was in abundance in him, as all of you know. He never behaved like a President of India in a ceremonial way or bound by protocols, and he remained as informal as he could have been, while also observing some kind of protocol. So these were some of the very basic things. And another very important thing which he used to tell us about the importance of teamwork, which is very important everywhere.
In your organization also teamwork is very important. He always used to tell us the single person is nothing, howsoever intelligent or competent the person may be, unless he has a good team, he can't succeed or she can't succeed. So one of the very important principles which I learned from him was the importance of team work. Then another thing which he used to tell us was that leader of the team has to owe everything. Suppose some mistake occurs, you cannot say that so and so has done it, so and so has done it. Even if the leader has not done it, he has to or she has to own it. And particularly about the mistakes. Successes he can or she can deliver to others. The achievements he can deliver to others. But if there is a failure, if there is a mistake, then it is the duty of the leadership to accept that and try to correct that in the next stage along with the other staff members. आप चूँकि मीडिया को ज़्यादा देखते थे, उनके मीडिया को, तो कहते हैं ये कि कलाम साहब जब भी कहीं जाते थे, तो उस दिन का अखबार मंगवाते थे कि आज वहाँ क्या छपा, और जब वो लौट के आते थे फिर अगले दिन भी अखबार मंगवाते थे कि आज क्या छपा। ये कितनी हकीकत है और वो ऐसा क्यों करते थे? No, that is true to large extent. He used to be, and that was in fact the job of press secretary and his section, to keep him apprised of important news of that place. Actually, उनका एक तो ये था कि he wanted to attend to the smallest problem wherever he was going. तो उसके लिए मीडिया से बेटर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है उसको जानने की, और सोशल मीडिया उस वक्त तक इतना डेवलप था नहीं 2002 to 7 में. So naturally he used to depend on newspapers, and this was our duty to brief him about the happenings there and what has happened yesterday means कि वो प्रेसिडेंट की विजिट का क्या रिपोर्टिंग है और क्या इम्पैक्ट है, और ख़ास तौर से ही वॉज वेरी कंसर्न अबाउट द ट्रैफिक जैम्स इन दैट सिटी ड्यूरिंग हिज विजिट, कि किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई व्हेन द मोटरकेड ऑफ डॉक्टर कलाम वॉज पासिंग थ्रू द सिटी, क्योंकि अक्सर होता है ये प्रॉब्लम्स वीवीआईपी मूवमेंट में. अच्छा, दूसरा उनका ये था कि उनका इम्पैक्ट इतना होता था जिस सिटी में भी जाते थे कि इट वाज द एंटायर सिटी यूज्ड टू बी ऑन रोड्स. मतलब आई हैव नेवर सीन सच क्राउड्स इन द विजिट्स ऑफ वीवीआईपीज वेयर पीपल वर कमिंग वॉलंटरली. मतलब ही वाज नॉट हेड ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी. पॉलिटिकल पार्टी का तो ये होता है कि पीपल आर ब्रॉट बाय पॉलिटिकल पार्टी वर्कर्स. अगर उनका कोई लीडर आ रहा है तो लोग बाकायदा इकट्ठे किए जाते हैं. हर पॉलिटिकल पार्टी में बसेस लग रही हैं, ट्रक्स लग रहे हैं टू ब्रिंग पीपल. बट डॉक्टर कलाम का तो ऐसा कोई सेटअप था नहीं कि लोगों को इकट्ठा किया जाए. तो वहाँ हज़ारों लोग सड़क पर होते थे हर सिटी में. मतलब 5 साल में जहाँ भी जब भी गए पूरे कंट्री में, he was such a crowd puller that people used to come on their own to wish him, to see him while passing through the city, or we used to stop on way just to wave them or to meet them or to talk to them. So that was his. और वहाँ जो पुराने लोग हैं वो अक्सर ये कहा करते थे कि ऐसा क्राउड हमने इंदिरा गांधी के टाइम में देखा करते थे कि लोग इतनी बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल के आते थे whenever Mrs. Indira Gandhi used to visit some place. So this day was everywhere. अच्छा, इनका ये था कि he was extremely popular throughout the country. But it was not the question of north, south, west, east, a major city, metropolitan city, small village, district headquarters. He was extremely popular. He was one such leader, maybe after Mahatma Gandhi. He was extremely popular throughout the country. Though he was not able to speak Hindi fluently, very little Hindi he used to speak. He was not able to fluently speak Urdu. Again, very little Urdu he used to speak. So even then, even in Hindi-speaking areas, in Hindi-speaking people, in Urdu-speaking people, any language,
any religion, any community, any region, he was extremely popular. तो अखबार में जो कहानी छपती होगी उसको फॉलो करते थे क्या? उसका फॉलोअप होता था? अखबार की कहानी को काफ़ी फॉलो करते थे और उसमें इंस्ट्रक्शंस भी देते थे और अखबार वालों से और अक्सर मीडिया से वो काफ़ी मिले अपने टेन्योर में और हमेशा वो ये कहा करते थे कि यू हैव टू बी मीडिया ऑफ 1 बिलियन पीपल। एक उन्हें शिकायत रहती थी मीडिया से कि यू वर टू मच अर्बन एरिया सेंट्रिक। ये उनकी हमेशा शिकायत रही कि टू मच अर्बन सेंट्रिक मीडिया है हमारे कंट्री का। रूरल एरियाज यू डोंट रिपोर्ट, यू डोंट गो, यू डोंट कवर, यू डोंट रिपोर्ट फ्रॉम रूरल एरियाज। और रूरल एरियाज़ की स्टोरीज़ भी आप अर्बन एरिया में बैठ के करते हैं, दिल्ली में बैठ कर करते हैं, कैपिटल सिटी में बैठ कर करते हैं। तो ये एक उनकी कंप्लेंट हमेशा रहा करती थी एंड यूज्ड टू से दैट मीडिया शुड बी मीडिया ऑफ 1 बिलियन पीपल ऑफ द कंट्री। एट दैट टाइम पॉपुलेशन वाज प्रोबेबली अराउंड, नाउ वी आर 1.4 billion. So at that time I think it was 1.5, 1.10 billion. Khan Sahab, my name is Tripti Nath. What is the one thing that makes him such an unforgettable president so many years after he's gone? Such an unforgettable president. And I'm told that every festival he would bring, he would order sweets. It's quite cold. I understand that on every festival, Holi, Diwali, Eid, Christmas, he would order sweets and have it distributed to all workers. Is that true? Yeah, that's true. Actually, on all religious occasions, and as well as on New Year and 15th August and Republic Day, and religious festivals like Diwali, Eid, Holi, Raksha Bandhan, and Christmas, and also Guru Nanak birthday, he used to meet people. And that was quite an open house throughout the day. Not only the employees, but everybody could have come to Rashtrapati Bhavan to greet him. And the whole day, almost 6-7 hours, he used to be in Mughal Gardens at a particular place where people can come and greet him, meet him. And then he used to order sweets and everything for all the general people, not only staff. The staff, though, they can be looked after easily, but for all the people. And normally, I remember at least 4,000 to 5,000, 4,500 people used to visit on such occasion. You work so closely with him. Ji. I mean, we get to hear in bits and pieces about that he was a simple man. Yeah. But since you are here, and I would like to know from you, कि उनकी routine क्या थी? You know, how simple or what was his routine? Actually, उनका routine जो था वो बड़ा it was not a normal routine in a way, क्योंकि उनके जो timings थे वो कुछ और timings follow किया करते थे for various things, starting from breakfast to dinner. So he used to woke up generally at 6 a.m. or so, 6:30, 7, like between 6 to 7. Then every day he used to offer namaz. There is a morning namaz called Fajr in his room. But he was not going to any mosque or anywhere. He used to offer namaz in his own room. And then he used to read some religious scriptures like Quran, Gita. Then another thing he used to read was, there is one Tirukural written by Thiruvalluvar, which is very popular in Tamil Nadu. It is in Tamil. And these are some shloks and about every good things, and also about governance and all that. Then he used to go for walk, and which he was doing almost regularly. Then after coming back from walk, he used to take breakfast around 9 a.m. or so, 9:30. And then during breakfast also, he used to call officers one by one, just to brief him about what is the position that day and what are his engagements and all that.
Then after breakfast, he used to come to his study, that is his office, at 11 or 11:30, like that. He used to attend meetings, meet visitors, do other things, and continue there till at least 4 p.m. So his timings, like his lunch time was always 4 to 4:30. And so it was quite late. And after that, he used to take a break for about half an hour, and again some meetings and all that. Then again coming back to study. Then he used to take a walk in Mughal Garden again in the evening around 6:37 p.m. Continue till 8. Then again meetings with his personal staff and prepare for the next day. क्योंकि उनका एक सिस्टम ये था कि वो अगले दिन के लिए लेक्चर्स जो भी कहीं होते थे उसकी तैयारी वो किया करते थे, और वो उसके लिए अक्सर लेक्चर्स के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बनाया करते थे, विच ही हिमसेल्फ यूज्ड टू सुपरवाइज. He was known for PowerPoint presentations in various lectures. मतलब 80% lectures in India and abroad he gave through PowerPoint presentations. मतलब he will show the slides, then he will explain, and then again show the slides. So that he used to do till about midnight every day. And his dinner time was after that, around 12:30. So that way, particularly about lunch and dinner, so he used to follow a very different kind of schedule. नाश्ते में क्या लेते थे दोपहर खाना एक्चुअली ही वाज ए स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन, और नाश्ता मैंने उनके साथ बहुत बार किया. अक्सर वो ऑफिसर्स को नाश्ते बुला लेते थे, तो मुझे भी बहुत बार मौका मिला उनके साथ नाश्ता करने का. तो उसमें होता था इडली, सांभर एंड सम फ्रूट्स, जो भी सीजनल फ्रूट होता था, और कभी कभी डोसा. डोसा ही वाज नॉट टेकिंग रेगुलरली, बट इडली सांभर ही वाज रेगुलर. डोसा, समटाइम्स डोसा आल्सो, एंड फ्रूट्स. तो फजीर की नमाज के बारे में आपने बात करी थी, तो जैसे मैंने पढ़ा था उनको कि जब भी कोई ख़ास मसले पे फंस जाते थे तो फजर की नमाज में उनको वो सोचते थे, इल्हाम आता था. जैसे एक बार रिज़ाइन करने की बात आई तो शेखावत साहब से मुलाकात नहीं हो पाई थी. अगले दिन फिर नमाज में सोचा कि अगर रिज़ाइन दे देंगे तो मेरी वजह से एक हंगामा खड़ा हो जाएगा. फिर एक जब SLV समंदर में गिर गया तब उनको लगा कि मुझे छोड़ देना चाहिए. फिर बाद में उनको लगा कि तो ये क्या सही है इसमें? अब ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि इट वाज बिटवीन हिम एंड एंड हिज क्रिएटर, कि वो उस नमाज में वो मतलब ही माइट बी आस्किंग गॉड ऑलमाइटी अल्लाह टू गाइड हिम, दैट वी ऑल डू. Actually I am not sure about that, but he was a regular फजर नमाज पढ़ा करते थे मॉर्निंग में, ये मुझे पता है. मगर उन्होंने एक जगह ये अपनी बुक में लिखा है, particularly the question of resigning after adverse comments by Honorable Supreme Court of India in the dissolution of Bihar Assembly. And though actually they did not make comments against him, they made comments against the government and Mr. Bhutta Singh, who was governor at that time, who had recommended dissolution, which was struck down by Honorable Supreme Court. But because dissolution was approved by President of India ultimately, so he thought that I am also responsible for that. I should not have okayed that. I should not have approved despite the recommendation of the governor and the Council of Ministers, because normal thing is that it comes from governor, then the cabinet passes it, then it comes to president, but president can refuse also, but can refuse only once. If it would have come again, he would have to accept, but he did not refuse even once. तो वो हमेशा इसको रियलाइज करते थे कि मुझे वो मना करना चाहिए था. तो कमेंट्स उनके अगेंस्ट कुछ नहीं थे, बट ही वाज थिंकिंग ऑफ रिजाइनिंग, कि आई ऑन मॉरल ग्राउंड आई शुड रिजाइन. बट देन मनमोहन सिंह जी केम, ही ऑल्सो एक्सप्लेन टू हिम कि आपके ऊपर तो कोई इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं, जब गवर्नर रिकमेंड कर रहे हैं, कैबिनेट रिकमेंड कर रही है. और ही वॉज नॉट इन दिल्ली ऑल्सो दैट डे, ही वॉज इन मॉस्को.
and papers were sent to him to Moscow around 4 a.m. in the morning. The papers reached, and he had no particular briefing except that Prime Minister had spoken to him twice. So he had no opportunity to meet the opposition leaders of that time. That was a dissolution in 2006 when I think BJP and Nitish Kumar, they came together and they wanted to form a government, and there was some confusion about the majority, that who owns majority, either Nitish, BJP combine or this RJD and Congress. तो उसके बारे में फिर गवर्नर ने रिजोल्यूशन रिकमेंड कर दिया था, क्योंकि सम मेंबर्स ऑफ रामविलास पासवान जी पार्टी दे डिक्लेयर देयर सपोर्ट फॉर दिस एनडीए अलायंस. तो उससे ये लगा था कि मेजॉरिटी उनकी तरफ चली गई है. तो दैट इन दो सर्कमस्टांसेस द डिसोल्यूशन वाज रिकमेंडेड, व्हिच वाज अप्रूव्ड बाय प्रेसिडेंट. So is it true that Mr. Kalam paid for his conveyance paid for the conveyance of his family personally, and not used the government's money? Yeah, that's absolutely true. That I have also written in my book. Actually, he had a big family, though he did not have an immediate family. He was not married, but he had a lot of family members who were children of his brothers or sisters and other relatives. So he decided that he told me that I want to call them at least once during my tenure. I want to call everybody. And so he had chosen 45 relatives. और सिर्फ एक बार के लिए, मतलब उन्होंने वो उसमें नहीं थे कि एवरी डे somebody is coming or staying and all that. He said only once. I will call all of them together for 4 days, 5 days. तो उन्होंने अपना लिस्ट बनाई उन लोगों की, फिर उनके सबके रिजर्वेशंस कराए. जिसको ट्रेन से आना था उसके ट्रेन से कराए, जिसको बाई एयर आना था उसके बाई एयर कराए, और उसका पैसा सब नेचुरली उन्होंने दिया. उसके बाद जब वो लोग पहुँचे, कोई एयरपोर्ट पहुँचा, कोई स्टेशन पर पहुँचा, तो उन सब के लिए उन्होंने व्हीकल्स अरेंज की, बट नॉट ऑफ राष्ट्रपति भवन. ही अरेंज टैक्सीज which he paid from his own account. Then further they stayed for about 6 days, I think. तो comptroller of household जो होता है, जो who manages all food, other things in Rashtrapati Bhavan, who is generally a naval officer. He organizes everything, parties and kitchen and these things. तो he told him कि इनके ऊपर जो खर्चा होगा खाने पे वो मैं पे करूँगा. तो वो शायद कोई कितना बिल आया 5-6 दिन में. आई हैव रिटन फिगर्स आल्सो, आई डोंट रिमेंबर नाउ. तो वो उन्होंने पे किया, फिर उनको ड्रॉप कराया स्टेशन. तो अगेन देन वन डे दे ऑल वेंट टू अजमेर शरीफ फॉर पिलग्रिमेज एंड ज़ियारत. तो वो ही ऑर्गेनाइज ए बस फॉर देम एंड फ्रॉम हिज ओन पर्सनल अकाउंट. So they went in bus morning, evening. Early in the morning, evening. I think they stayed overnight and came back next day. अली जनाब, आपका खैर मकदम है जनाब. सवाल ये है कि जनाब आपकी खुद की और सारी पीढ़ियों की ज़िंदगी इस मुल्क में गुजरी. आपने एक लंबा अरसा अफसरशाही में गुजारा. तो जनाब आपके एक मुस्लिम अफसर के नाते इस देश में और अफसरशाही में क्या तजुर्बे रहे आपके अपने नज़रिए से, और आप कलाम साहब के बहुत निकटस्थ भी रहे, इस नज़रिए से जो हमारे मुस्लिम नौजवान हैं मुल्क के, उनके लिए आपका क्या पैगाम हो सकता है कि वो किस तरह से सरकारी गैर सरकारी इदारों में काम धंधों रोज़गार, खेती किसानी, शिक्षा या किसी भी फील्ड में आईटी सेक्टर में जाकर के वो किस तरह से तरक्की करके अपनी ज़िंदगी खुशहाल बना सकते हैं और इस राष्ट्र के निर्माण में वो योगदान दे सकते हैं. तो आपका क्या पैगाम हो सकता है आपके तजुर्बे से और कलाम साहब के नज़रिए से जनाब? देखिए, मेरा तजुर्बा जो भी है और कलाम साहब का भी बहुत बड़ा तजुर्बा था और उनका नज़रिया था. पहली बात तो ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन दिस कि मुस्लिम या हिंदू या सिख या क्रिश्चियन.
his message was to all youth of the country. He might be from any religion. तो वो हमेशा एक्चुअली यूथ को वही मैसेज देते थे विच वाज एप्लीकेबल टू एवरीबडी कि डू योर वर्क, यू शुड हैव ए गोल, वर्क हार्ड टू अचीव दैट गोल. और ये भी कहते थे कि इफ़ यू आर वेरी ट्रू अबाउट योर एम्बिशन एंड अबाउट योर व्हाट यू वांट टू डू, व्हाट यू वांट टू अचीव, नोबडी कैन स्टॉप यू, and it is immaterial to which religion, caste, community, place and educational background you belong to. इसमें आपका भी जवाब आ जाएगा, क्योंकि यूज टू से कि अगर आप अपने में क्लियर हैं, आपका गोल क्लियर है, आप उस गोल को अचीव करने के लिए कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, ईमानदारी के साथ करते हैं, तो आपको वो चीज़ ज़रूर मिलेगी, चाहे आपका ताल्लुक़ किसी रिलीजन से हो, कास्ट से हो, कम्युनिटी से हो, किसी प्रांत से हो, किसी भाषा को आप बोलते हो, वो यू विल अचीव दैट. दैट वाज हिज कन्विक्शन एंड ही यूज्ड टू गिव हिज ओन एग्जांपल बिकॉज ही आल्सो केम फ्रॉम ए हम्बल बैकग्राउंड. He came from Rameshwaram, where his family did not have much of educational background. His father was also, he was a fisherman and used to make boats for fishermen. Then his father was also an imam of the local mosque. He was a very religious person. And his entire family that way at that time was not that educated. So he came from a humble background and rose to become a great scientist and finally the president. So he was always used to say that, and also used to think that whether it is a Muslim or Hindu or everybody has a chance and everybody should come with clear goals and work hard to achieve those goals. सर, मेरा नाम मंजीत ठाकुर है और दो सवाल हैं एपीजे अब्दुल कलाम साहब के बारे में. पहला सवाल तो यही कि जो प्रमुख स्वामी जी अक्षरधाम या जो स्वामी नारायण संप्रदाय है उसके प्रमुख स्वामी जी के साथ बड़े अच्छे रिश्ते थे उनके, तो किस तरह की बातचीत आप लोगों से शेयर की, किस तरह का अनुभव उनके साथ जो रहा उनका कलाम साहब का वो शेयर किया. दूसरा कि आपको हम लोगों ने कई सार्वजनिक मौक़ों पे सुना है और आप अपने संबोधनों में हमेशा कुछ न कुछ शेर और शायरी कहते थे और लोग डिमांड भी करते थे कि आप सर सुनाएं. तो क्या कलाम साहब के साथ कभी ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा कि सर एक शायरी हो जाए, ऐसा कुछ कहा कभी उन्होंने? एक्चुअली क्या था कि स्वामी प्रमुख जी जो अक्षरधाम के हेड थे और ये स्वामी नारायण सेक्ट के हेड थे, उनसे उनका संपर्क पहले से था, राष्ट्रपति बनने से पहले से, काफ़ी पहले से. और वो उन्होंने एक डायलॉग उनके साथ किया था, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी डायलॉग, और वो अक्सर स्वामी प्रमुख महाराज से मिला करते थे और अक्षरधाम गांधीनगर में उनकी मीटिंग्स हुआ करती थी. राष्ट्रपति बनने के बाद भी वो गए. 12 अगस्त 2002 को ही विजिटेड अक्षरधाम. व्हेन ही विजिटेड रॉयट अफेक्टेड एरियाज of that time, 2002, on 12th August 2002, he went to meet Swami Pramukh Maharaj also. In the afternoon, I was also with him and went to the Akshardham complex in Gandhinagar. तो उनका ये था कि स्पिरिचुअलिटी और साइंस में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है. बोथ हैव द सेम गोल, सेम ऑब्जेक्टिव, and both have to work for the nation, for the progress of nation, for the development of the country. और उन्होंने एक किताब भी लिखी उनके साथ. वो किताब भी बहुत वर्थ रीडिंग है, which he wrote with स्वामी प्रमुख महाराज. वो ट्रांसेंडेंस. वो उस किताब को भी पढ़िए, and it has how the science and religion they work for the same purpose. दूसरा, जब वो प्रेसिडेंट बने तो वो अक्सर एक्चुअली स्पिरिचुअल लीडर्स और रिलीजियस लीडर्स से मिला करते थे. तो लोग अक्सर उनसे सवाल पूछते थे कि भाई आप साइंटिस्ट हैं, आप इन लोगों के चक्कर में कहाँ पड़े हुए हैं कि आप मुस्लिम से भी मिल रहे हैं और हिंदू से भी और क्रिश्चियन से भी और
सिक्स से भी और पारसी से भी, रिलीजियस लीडर्स, बड़े रिलीजियस लीडर्स है, जैन्स, तो वो उनको काफ़ी उनका इंटरेक्शन होता था इन लोगों से और इनके कॉन्फ्रेंसेस में भी जाते थे। तो वो ये कहा करते थे कि भाई मैं इसलिए इनसे मिलता हूँ कि इन लोगों की अपनी अपनी कम्युनिटी में और अपने अपने सेक्ट में बहुत फॉलोइंग है, तो अगर आपको लोगों तक पहुंचना है, कोई मैसेज पुट अक्रॉस करना है, तो यू हैव टू टेक देयर असिस्टेंस, क्योंकि खाली राष्ट्रपति कलाम कोई बात कहेंगे तो वो लोगों की समझ में नहीं आएगी। मगर अगर आप इन लोगों के थ्रू करेंगे और इनको भी आप कन्विंस कर देंगे कि जो बात आप कह रहे हैं वो ठीक है एंड दिस मैसेज शुड बी पुट अक्रॉस, देन इट विल बी हेल्पफुल। शायरी का ये था कि एक्चुअली मुझसे उन्होंने स्पेसिफिक शायरी का तो कभी नहीं कहा, बट ऐसा होता था कि राष्ट्रपति भवन में उस टाइम कल्चरल प्रोग्राम्स बहुत होते थे और अक्सर उन कल्चरल प्रोग्राम्स में मैं या तो वेलकम स्पीच देता था या वोट ऑफ थैंक्स देता था, और लोग भी देते थे, मगर कई बार मुझे मौका मिला तो मैं उसमें कोई ना कोई कपलेट उर्दू का ज़रूर सुनाता था, एंड ऑफ थैंक्स स्पीच, या और वो अप्रोप्रिएट भी होता था उस टाइम कल्चरल प्रोग्राम में। तो ही यूज्ड टू कॉम्प्लीमेंट मी ऑलवेज, वेरी गुड कपलेट, he always used to say, and then एक बार शायद मैंने कपलेट नहीं सुनाया, कुछ क्या बात हुई, तो then he reminded me कि today you did not read any शेर। तो इतना इंटरेस्ट उनका ज़रूर था, मगर उनका थोड़ा इंटरेस्ट तमिल पोएट्री में ज़्यादा था, which he, because he was able to enjoy Tamil poetry more, because, and also a little bit of English poetry, but what I saw was that he was interested in Tamil poetry. खान साहब, आपने देखा होगा कलाम साहब की ज़िंदगी में सादगी और मिजाज में फ़कीरी, और आपने ऐसी बहुत सारी चीज़ें वो देखी होंगी जो शायद हम लोगों ने ना देखी हो, तो वो कौन सी हैबिट्स हैं, वो कौन से स्टाइल हैं उनके जो आप अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश कर रहे होंगे अभी? नहीं, उनका सबसे बड़ा, जैसे मैंने कहा, सिंप्लिसिटी, ह्यूमिलिटी, हर किसी को, क्योंकि लोग उनसे मिलने आते थे तो समझते थे कि हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मिलने जा रहे हैं, वो भी डॉक्टर कलाम, क्योंकि ही हैड अ बिग नेम एंड फेम इवन बिफोर बिकमिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब उनकी जो ग्लोरी थी या नेम एंड फेम था, दैट वाज नॉट ओनली बिकॉज ही वाज प्रेसिडेंट, ही वाज एक्सट्रीमली पॉपुलर इवन बिफोर दैट, as a missile man, as a man who gave satellite to the country, the first indigenous satellite in 1980. Then he gave the missile system. Then he was in the core team of atomic explosion in Pokhran. Then he was Bharat Ratna before becoming president. तो वो उनका ये था कि इस सब के बावजूद he was a very simple man. He used to offer people, कहीं बैठे हैं तो किसी को प्लेट दे देंगे, किसी को खाना निकाल के देंगे, तो ऑल दिस स्टाफ को भी, इवन जिस दिन उनकी लास्ट डे, जिनकी डेथ हुई है जिस दिन, कल का दिन, लाइक 27 जुलाई, तो ही ट्रेवल्ड फ्रॉम दिल्ली टू गुवाहाटी टू शिलोंग। मतलब यू सी ए पर्सन एट द एज ऑफ 83 ट्रैवलिंग टू गिव लेक्चर टू IIM स्टूडेंट्स इन शिलोंग। तो उस दिन वो ये उनका ये था ना कि यूज टू हैव वेरी हेक्टिक शेड्यूल। वो सुबह 7 बजे दिल्ली से चले, गुवाहाटी पहुँचे, गुवाहाटी में नहीं रुके, फ़ौरन बाई रोड शिलोंग गए, और वहाँ राजभवन नहीं गए पहले क्योंकि टाइम हो रहा था लेक्चर का 6 बजे, तो गवर्नर वाज वेटिंग, बट ही वेंट स्ट्रेट टू IIM, और जैसे ही लेक्चर देने के लिए ही स्टूड ऑन द पोडियम, ही फेल डाउन एंड डाइड। तो उस बीच में भी जब वो IIM पहुँचे हैं, क्योंकि उनका मोटर केट था, तो उसमें एक सिक्योरिटी पर्सन थ्रू आउट चेंज, वो एक आगे उनकी पेट्रोलिंग व्हीकल में मशीन गन लिए हुए खड़ा था, क्योंकि वो थोड़ा सा एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटी का एरिया भी है, गुवाहाटी से शिलोंग का रोड का रास्ता।
तो ही वॉज वेरी डिस्टर्ब कि भाई ये आदमी खड़ा है ज़बरदस्ती और पहाड़ी एरिया में. तो ही मेड इट अ पॉइंट, ही टोल्ड हिज PS घनश्याम शर्मा कि आई वांट टू मीट हिम. तो वो IIM शिलोंग जब पहुंचे हैं और ऑडिटोरियम में पहुंचे हैं, उसी रास्ते में उसको उन्होंने बुलाया और उससे कहा कि आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि आपको मेरी वजह से इतनी देर 4 घंटे की ड्राइव थी गुवाहाटी टू शिलोंग, आपको खड़ा होना पड़ा. तो उस टाइम पे व्हेन आफ्टर 15 मिनट ही वाज पासिंग अवे. और उस टाइम उनके अंदर क्या चल रहा होगा और वो तो अल्लाह ही बेहतर जानते हैं और क्या उनकी कंडीशन थी, मगर इवन देन he called that person and met him. So these were the standards which he left. Sir, I have a question. My name is Yasmin Khan and I want to ask, जब हम अब्दुल कलाम सर की बात करते हैं तो जैसा कि you said he was a dynamic leader. So I want to know कि मीडिया के साथ उनका कैसा इंटरेक्शन था, क्योंकि अगर अभी हम कोई ट्रूथफुल नैरेटिव प्रेजेंट करते हैं, बी इट एनी लीडर, इफ़ ही टॉक्स अबाउट समथिंग 10 लोग क्रिटिसाइज करते हैं, 10 लोग सपोर्ट करते हैं. बट उनके केस में मैंने देखा है आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखें, कहीं से भी बिलोंग करें, nobody criticized him. Yeah. I have never read any text criticizing him. What is it? Was it something with the media or with the people? I want नहीं, to. that was in fact with the people. एक तो उनका ये था कि he was very transparent person and throughout his life probably he was neither in favor of any person nor against any person. और अक्सर उनके जो बड़े क्लोज फ्रेंड्स भी थे वो इस बात से थोड़ा सा मतलब उनके सामने कहता तो कोई नहीं था, बट थोड़ा सा उनमें ये फीलिंग थी कि वो कभी किसी का आउट ऑफ वे हेल्प नहीं करते थे. मतलब हेल्प, अब आप उसे आप हेल्प कहें या फेवर कहें या रॉन्ग फेवर कहें, मगर जिस आदमी का काम होगा वो तो यही कहेगा कि हेल्प है. तो जो आपने कहा ना कि नोबडी वाज अगेंस्ट हिम, तो इसके बावजूद कि वो किसी को फेवर नहीं किया उन्होंने, मगर अगेंस्ट इसलिए नहीं था कि वो कभी कोई रॉन्ग फेवर अपने लिए भी नहीं करते थे या अपनी फैमिली के लिए या किसी क्लोज आदमी के लिए. तो इसलिए जिनके अगेंस्ट भी उन्होंने डिसीजंस भी लिए, दे वर ऑल्सो नॉट एबल टू क्रिटिसाइज बिकॉज दे थॉट कि देयर इज नो पॉइंट इन क्रिटिसाइजिंग दिस पर्सन बिकॉज ही हैज डन इट ऑन मेरिट and he has not favored or disfavored anybody. सर, अभी आप कुछ धार्मिक नेताओं के बारे में बात कर रहे थे कि वो मिला करते थे, तो जैसे विजन 2020 उनका था, क्या शायद मैंने ऐसा सुना, ऐसा पढ़ा भी था कि कोई ऐसा संगठन बनाना चाह रहे थे जो सारे धर्म के लोगों को, जो नेता थे, उनको मिला करके ताकि देश में शांति का माहौल बने. हाँ, बनाया था उन्होंने. तो उसकी क्या स्थिति है? उसकी स्थिति कुछ भी नहीं है. वो शायद उसके बाद वो चल भी नहीं रहा है. he made an he was मतलब he did not make it but he was instrumental. There was an organization called I think 4 मैंने लिखा, नहीं sorry not 4, FUREC, FUREC दिखाना शायद किताब में है, मैंने लिखा FUREC, FUREC, Foundation for Unity of Religions and Enlightened Citizenship. This was the organization which he had inaugurated in Surat, and there was a big conference of religious leaders of almost all the religions, and there was a Jain saint, Acharya Mahapragya. He was particularly very active in this with him, Acharya Mahapragya. He is also pastor. He was a very influential Jain saint. और उसके बाद आचार्य महाप्रज्ञा ने कुछ दिन चलाया था उसको, मगर उनका भी इंतकाल हो गया. ये भी थे उसमें, स्वामी प्रमुख महाराज भी थे, मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स भी थे, क्रिश्चियंस भी थे, एंड दैट इज़ वेरी इनफैक्ट अप्रोप्रिएट. एंड द चार्टर जो उसका था वो सब बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है आज के हालात में भी, और उसको रिवाइव करना चाहिए. अभी मुझे किसी फंक्शन में वो मिल गए थे, आचार्य एक जैन है, मुनि लोकेश,
तो वो भी उसमें आचार्य महाप्रज्ञा के साथ उनके पास आया करते थे। तो मैंने उनको सजेस्ट भी किया था आचार्य लोकेश मुनि को कि आप उसको रिवाइव करिए। बहुत ज़्यादा। मैंने अभी पिछले साल ही की बात है, अबाउट 8-10 महीने पहले आई मेट लोकेश मुनि इन सम फंक्शन। खान साहब, मेरे दिमाग में 2 सवाल आ रहे हैं। फन प्लीज। जी जी। मेरे जहन में 2 सवाल आ रहे हैं। एक तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि राष्ट्रपति कलाम जो थे वो हमने सुना है कि वीणा बजाते थे। जी जी। क्या राष्ट्रपति भवन में आके भी वो वीणा बजाई है उन्होंने? बजाई है उन्होंने, बट नॉट रेगुलरली। कभी कभी करते थे। रुद्र वीणा दैट ही वाज कीपिंग, वो उनकी पर्सनल वो था। और वो जब आए थे उधर तो ही ब्रॉट दैट। और दूसरा सवाल मुझे दरअसल पूछना था कि एक बहुत मशहूर किस्सा है, जब पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जनरल मुशर्रफ आए थे वहाँ, तो वो अलग अलग लोगों ने अलग अलग अंदाज में बयान किया है वो किस्सा। तो आप भी हमें ज़रा बताएं और हमारी यादें ताज़ा करें। व्हाट वाज दैट इवेंट अबाउट एंड व्हाट हैपेंड देयर? नहीं, वो कुछ नहीं। वो तो प्रेसिडेंट मुशर्रफ वाज ऑन विजिट टू इंडिया, सो ही हैड अ मीटिंग विद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आल्सो। तो उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दिया था मुशर्रफ साहब को, हाउ टू रिमूव पॉवर्टी इन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो वो उन्होंने 40 मिनट का प्रेजेंटेशन बनाया था। तो उन्होंने कहा कि कश्मीर वगैरह की बात तो आप करिएगा प्राइम मिनिस्टर से, मैं तो आपको ये लेक्चर दे सकता हूँ, हाउ टू रिमूव पॉवर्टी इन इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ। तो मुशर्रफ वाज वेरी सरप्राइज्ड कि यू नो सो मच अबाउट पाकिस्तान, क्योंकि इसमें इंडिया का भी था और पाकिस्तान का भी था कि गरीबी कैसी दूर की जाए, विच इज़ अवर कॉमन एनिमी। और इसी तरह से जब प्रेसिडेंट बुश आए थे तो उस ज़माने में न्यूक्लियर डील का बहुत बड़ा इशू था फॉर न्यूक्लियर रिएक्टर्स ऑफ इंडिया, कि वेदर वी शुड एंटर इनटू एग्रीमेंट विद यूएसए फॉर एनरिच्ड यूरेनियम फॉर आवर रिएक्टर्स फॉर peaceful purposes. It was a big issue. In fact, government was about to fall on this issue. Left were against it, and UPA, Manmohan Singh ji was pursuing this. Then Manmohan Singh ji took a lot of help from Dr. Kalam, because Dr. Kalam was also in this favor. That for nuclear energy we require nuclear reactors, enriched uranium, and also India has abundant thorium, so we can have thorium-based reactors also. So he was a strong advocate of this. So he made a presentation about nuclear energy before Bush. That was again about half an hour. Then Bush said that I need to be a scientist to understand all this. He very frankly told after the session that I have to be a scientist to understand all this. That was quite a good presentation which he made about the need of India-America cooperation in nuclear energy. नमस्ते सर, मेरा नाम जतिन बर्नवाल है। जितनी ज़्यादा लोग कलाम सर के चाहने वाले लोग थे, कुछ परसेंटेज या 1-2 लोग ऐसे भी होंगे, कुछ लोग होंगे जो कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हेटरेट भी होगी जिनके। तो उस सिचुएशन पे जब वो बहुत ज़्यादा लोग उनके चाहने वाले थे, तो वो कभी जब फेलियर मोमेंट आते होंगे या कभी वो डाउन फील करते होंगे, डिप्रेस्ड फील करते होंगे, तो वो उस सिचुएशन से कैसे कोप अप करते थे। और सक्सेस स्टोरी तो हम लोग सभी जानते हैं, लेकिन कभी जो फेलियर स्टोरी आती है तो क्या आप उनके बारे में कुछ उस पर नहीं, फेलियर स्टोरी का एक तो उनका बहुत फेमस है, जब वो उनका पहला सैटेलाइट, जिसका उन्होंने खुद भी बहुत जगह लिखा है, 1979 में रोनी सैटेलाइट क्रैश हो गया और ड्राउंड इन बे ऑफ बंगाल। दैट वाज द फर्स्ट इंडिजिनस सैटेलाइट व्हिच इंडिया हैड लॉन्च्ड फ्रॉम श्रीहरिकोटा इन 79. तो दैट वाज क्वाइट अ फेलियर. And ultimately, because he was the project director, so people criticized him. इनका failure है. Though Dr. Satish Dhawan was chairman of ISRO, he supported him. Then he said, "Give me another year." And same team of scientists which were there in failure, he said, "I will succeed with this team only. No change." He used to say very clearly that there will be no change. Same people who have failed will succeed next year. So, and they succeeded. और 1980 में इंडिया ने अपना पहला सैटेलाइट रोहिणी छोड़ा SLV-3 से, और आज हम इस सिचुएशन पे पहुंच गए हैं कि नाउ
Chandrayaan-3 is likely to land over the moon on August 23rd. और now we are launching PSLV, GSLV. पहले इंडिया अपने सैटेलाइट छोड़ने के लिए फ्रांस और रशिया जाता था, तो कलाम साहब made it happen first time. And now we are launching satellites of 52 countries from India. That was all because of the expertise and technology developed by him at that time under guidance of Dr. Vikram Sarabhai and Dr. Satish Dhawan. So he was never never perturbed by criticism. दूसरा एक उनका criticism कुछ साइंटिस्ट करते थे कि कलाम साहब हैज़ बीन वेरी लकी कि उनको कुछ चीज़ों के क्रेडिट बहुत ज़्यादा मिल गए मतलब प्रेसिडेंट बनने से पहले। तो वो मतलब काम और लोगों ने भी साइंटिस्ट्स ने बहुत किए होंगे, वो करते हैं, मगर somehow he was lucky enough कि country recognize his services and people recognize his services quite a lot. मतलब whatever he did for the country, country returned to him also in various forms. तो इससे भी थोड़े कुछ साइंटिस्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं रहते थे और किसी ना किसी तरह से उसको एक्सप्रेस भी करते थे क्योंकि तो वो बट ही वाज नॉट डिस्टर्ब्ड बाय दैट, ही टुक इट इन हिज in the same way as the praise or compliment. Mr. Khan, since Dr. Kalam was so well read and you told us how painstakingly he prepared his lectures, and I understand he must have spent a lot of time in the company of books. What happened ultimately to his collection of books? Did he will them to anybody or to the Rashtrapati Bhavan? Yeah. He took it away. And actually what happened was कि जब उनका रिटायरमेंट हुआ 25 जुलाई 2007 को, तो उससे पहले उनका जो लास्ट पब्लिक फंक्शन था वो इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में था. आई हैड ब्रॉट हिम टू इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर टू एड्रेस द मेंबर्स ऑफ IICC. एक्चुअली वो उनका पूरे 5 साल से पेंडिंग चल रहा था और वो आ ही नहीं पाए थे, तो आई वॉज इंसिस्टिंग कि आपको अब तो आना ही है, तो ही एग्रीड. देन ही केम टू सेम ऑडिटोरियम जहाँ भी डॉक्टर ईसा आए थे, तो वो ही एड्रेस द मेंबर्स and he said that and that attracted big headlines in the media next day, that I came to Rashtrapati Bhavan with 2 suitcases and 2 cartons of books, and now I am leaving Rashtrapati Bhavan with the same suitcases, but books now I am having 3 cartons. One is added and these are my personal books, and if you permit I am taking them back. तो 3 कार्टन बुक्स के वो साथ ही ले गए थे. कलाम साहब के जो विचार हैं मेरे ख्याल से अब वो थोड़े से मध्यम पड़ने लगे हैं. उनके विचारों को फैलाने के लिए कोई राष्ट्रीय स्तर पे कोई कार्यक्रम हो रहा है, कोई ऐसा प्रयास कर रहा है? अगर आपकी नज़र में हो तो हमें बताइए. नहीं, मेरी नॉलेज में तो ऐसा कोई नहीं है कि पर्टिकुलरली उनके विचारों को पॉपुलराइज करने के लिए कोई किसी की कोई पहल है. हाँ, ये ज़रूर है कि लोग बाग कोट करते रहते हैं उनको, अभी भी बहुत लोग कोट करते हैं, जो पोजीशंस पे हैं वो भी करते हैं, जो और लोग हैं, इंडिपेंडेंट लोग हैं. तो कलाम साहब की जो बातें हैं वो तो अभी भी रेलेवेंट हैं और लोग कोट करते हैं, मगर कोई ऐसा ऑर्गेनाइज्ड वे में कुछ हो रहा है मेरी जानकारी में नहीं है. मगर ये जो एक उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी फ्यूरैक, अगर उसको रिवाइव किया जाए और अगर उसकी वजह से कोई पहल उसमें हो तो वो बहुत अच्छी रहेगी, और वो पहल हो सकती है आपके खुसरो फाउंडेशन से करवाइए. मेरा सवाल ये है कि सर जैसे कि वो प्रेसिडेंट थे, तो कभी उनके ऊपर ऐसा पॉलिटिकल प्रेशर हुआ कि कोई बिल आया उनके पास, बिकॉज ही वाज अ मोरल पर्सन, एथिकल पर्सन, कि बिल आया और एक लिमिट होती है कि एक बार प्रेसिडेंट साइन नहीं करेंगे, 2 बार नहीं करेंगे, लेकिन फिर उसके बाद उनको वो बिल पास ही करना पड़ेगा. कभी उनकी ऐसी मजबूरी हुई कि वो उस बिल को पास नहीं करना चाहते थे वो, लेकिन उनके मोरल और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बीच में या उस थॉट के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट हुआ हो? नहीं, वो तो बहुत फेमस बिल है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल 2006.
which he returned to Parliament. And that is the only time in the history of independent India when a bill has been returned to Parliament. एक ही बार हुआ है अभी तक 75 साल में, जब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल उन्होंने पार्लियामेंट को वापस किया था। और ये एक्चुअली प्रेसिडेंट की बहुत बड़ी पावर है, इतनी बड़ी पावर है कि अगर प्रेसिडेंट इसको एक्सरसाइज करने लगे तो बहुत सी चीज़ें प्रेसिडेंट गवर्नमेंट में गाइड कर सकते हैं। और ये एक इंडिपेंडेंट पावर है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन मंत्रिमंडल। उसमें प्रेसिडेंट को अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना पड़ेगा कि वेदर आई एग्री विद द बिल और रिफ्यूज एसेंट और रिटर्न इट फॉर रिकंसिडरेशन। सर एक बहुत किस्सा है, आई डोंट नो इट इज ट्रू और बट कि कहा जाता है कि उनकी जब शादी थी तो उस टाइम भी वो पढ़ रहे थे, उनका इतना फोकस था। ये किस्सा सच है या झूठ है? नहीं, पढ़ नहीं रहे थे। वो किस्सा ये है कि वो कोई किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, मगर किस्सा है मेरे पास कोई उसका ऑथेंटिक वर्जन मेरे पास नहीं है, और ना मैंने कभी उनसे पूछा और ना उन्होंने कभी इस तरह का बताया। कि एक ये है कि साहब उनका कोई मैरिज अरेंज हुई थी और ही वाज सो बिजी, तो वो ही वाज नॉट एबल टू गिव डेट ऑफ मैरिज, मगर वो मुझे मतलब पता नहीं हाउ फार इट इज ट्रू, बट ही नेवर मेंशन। मगर स्टूडेंट्स उनसे पूछते थे ये सवाल कि आपने शादी क्यों नहीं की, तो वो उसका जवाब ये देते थे कि आई डिड नॉट फाइंड टाइम। ओके सर, सो लास्ट क्वेश्चन, माई सेल्फ अनिका, क्या बच्चों से कोई शपथ वगैरह भी कराते थे? वो तो ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ शपथ, वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ शपथ। वो बच्चों को बिना शपथ के छोड़ते ही नहीं थे, और उन्होंने बड़ी 11 पॉइंट कभी 15 पॉइंट एक बना रखे थे उन्होंने, अपने बना रखे थे। और तो वो उनको शपथ ज़रूर दिलाते थे, और उसमें कई चीज़ें होती थी। वो बिना शपथ के तो प्रोग्राम कॉन्क्लूड करते ही नहीं थे। ही यूज्ड टू गिव ओथ टू स्टूडेंट्स। मीडिया वालों को भी करवाते थे, मीडिया को भी कराते थे, ऑफिसर्स को भी कराते थे, ऑफिसर्स को भी कराते थे। सर मेरे कोलीग यथार्थ ने डिलेमा की बात की कि हमने एक इंटरव्यू देखा था डॉक्टर एपीजे कलाम का, जिसमें एक छोटी सी बच्ची ने उनसे पूछा था कि जब आपने पोखरण में न्यूक्लियर बॉम्ब कैपेबिलिटी किया तो क्या आप इसको जस्टिफाई करते हैं? उसका एक बार उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन फिर उन्होंने उस बच्चे को बताया। आजकल हम ओपनहाइमर की भी बात कर रहे हैं। कभी कलाम साहब ने इसके बारे में कुछ शेयर किया कि जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स पूरी दुनिया में बनते हैं उसके बारे में उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था? नहीं, इसमें वो ये कहते थे कि न्यूक्लियर ही वाज ऑलवेज फॉर पीसफुल पर्पसेस। दूसरा वो ये कहते थे कि इट इज क्वाइट अ गुड डेटरेंट, एंड ही यूज्ड टू से दैट स्ट्रेंथ गिव्स रेस्पेक्ट, and suppose if you have to have all these kind of powers, then you will get a particular respect from other countries. So he was of the good firm view that we should become an atomic power, but not for destruction, for development and peaceful uses. But if somebody attacks you and uses that weapon against you, then you should have a strength to reply. So that was his motive behind this. Sir, जिस दिन very unfortunately कलाम साहब की डेथ हुई तो मैंने आपको कॉल किया था, and I guess you're traveling with him to Shillong. नहीं, I was not. You're not traveling, you are here. But जब मैंने आपको कॉल किया तो आप बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब थे, ऐसा लग रहा था almost you were in tears. जब आपने खबर सुनी थी कलाम साहब की इंतकाल की, तो आपके लिए it must have been a very personal moment. Yes, yes. No, it was a very personal moment for me. Initially, I did not, and I could not see any sign of anything. He is going to go after 3-4 days, and in fact, it was also afternoon. And I met him in his study in the 10 Rajaji Marg, where he used to stay after post presidency. और उन्होंने अच्छा ये करते थे वो, उन्होंने जब भी मैं जाता था तो वो मुझसे कई चीज़, मैं उस टाइम गवर्नमेंट में था, आई वॉज नॉट वर्किंग विद हिम, बट आई यूज्ड टू मीट हिम ऑलमोस्ट ट्वाइस ए मंथ और सो।
और अगर मैं नहीं जाता था तो यूज टू कॉल मी। मैं तो अपना और पोजीशन में था, मतलब आई वाज नॉट इन हिज स्टाफ और एनीथिंग, बट वो मुझे बुलाते थे कि भाई क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट में क्या हो रहा है, और जनरली और चीज़ें डिस्कस करते थे। तो उस दिन भी 2-3 चीज़ें उन्होंने डिस्कस की। एक तो उस दिन भी पार्लियामेंट नहीं चल रहा था, 23 जुलाई 2015 को, और उस दिन इशू था ललित मोदी का, जो आईपीएल वाले थे ना, कि वो चले गए हैं और डेडलॉक हो गया था सब पार्लियामेंट में। सुषमा स्वराज was under attack, probably she was foreign minister। तो वो पूछने लगे कि क्या हो रहा है, पार्लियामेंट क्यों नहीं चल रहा है, ये चल रहा है। तो आई टोल्ड हिम कि इस वजह से नहीं चल रहा है। फिर उन्होंने पूछा मुझसे कि एक्चुअली उससे पहले 19 जुलाई को देयर वाज ईद उल फितर, 19 जुलाई को ईद का फेस्टिवल था। तो देन ही टोल्ड मी दैट यू मस्ट बी इन खुर्जा ऑन ईद एज यूजुअल, क्योंकि मैं हर साल अपने होम टाउन जाता हूँ ईद के लिए। हाउ इज योर मदर, मतलब पर्सनल क्वेश्चंस। और तो इसी तरह की बहुत सी बातें हुई। तो फिर उसके बाद इट वाज अबाउट 4:40 और सो आई केम डाउन। तो वहाँ नीचे उनका पर्सनल स्टाफ मुझको मिल गया, मैं उनसे बात करने लगा। इतने में वो उनका ग्राउंड फ्लोर पे ये ऑफिस था और वो स्टडी फर्स्ट फ्लोर पे थी। तो ही केम डाउन, इट वाज जुलाई। तो वो मुझसे बोले यू आर स्टिल हियर। तो मैंने कहा हाँ सर, वो ये लोग मिल गए तो आई एम जस्ट मीटिंग देम, टॉकिंग टू देम। तो मैं उनके साथ बाहर निकला उसी गेट से। तो ही वॉज गोइंग फॉर ए वॉक in this humid afternoon, 4:40 PM पर वो अपने लॉन में वॉक के लिए जा रहे थे 23 जुलाई को। और तो वो पोर्टिको में मेरा ड्राइवर गाड़ी ले आया था। तो आई वॉज इन ए वेरी एम्बेरसिंग सिचुएशन। मुझे तो पता था नहीं कि ये मेरे साथ निकल कर आएंगे। अब वो मैंने कहा ये बड़ा ख़राब लगेगा कि मैं इनके सामने कार में बैठूंगा और ही इज स्टैंडिंग, तो और ड्राइवर मेरा खड़ा है वो डोर के पास, मतलब मुझे जाने के लिए। तो वो समझ गए कि ही इज फीलिंग एम्बेरेस्ड कि ये मेरे सामने ही विल नॉट सिट इन दी कार। तो बोले ओके। देन ही टुक ए लेफ्ट टर्न इमीडिएटली, दैट ओके गुड बाय करके वो चले गए। मैंने उससे पहले ड्राइवर को इशारा कर दिया था कि गाड़ी को आगे ले जाओ, आई विल कम आगे उनके सामने। मगर ड्राइवर वाज मोर इंटरेस्टेड इन लुकिंग एट हिम क्योंकि वो उसको मौका नहीं कभी मिला था डॉक्टर कलाम को, मतलब एकदम करीब से देखने का। तो मैंने उसको बाद में कहा, मैंने कहा भाई तुम बाहर क्यों नहीं ले गए गाड़ी? तो सर वो तो कलाम साहब आ रहे थे तो मैं उनको देख रहा था। तो दैट वाज माय लास्ट वेरी इमोशनल मीटिंग विद हिम एंड ही यूज्ड द वर्ड गुड बाय। मैंने बुक में भी लिखा है, आई डिड नॉट नो दैट दिस इज माय फाइनल गुड बाय। और उन्होंने मुझे वो लेक्चर भी दिखाया, क्योंकि उनका एक आदत ये थी कि अगर आप जा रहे हैं, इफ यू नो, मतलब आपने उनके साथ काम किया या कर रहे हैं, तो वो आप अपना लेक्चर दिखाते ज़रूर थे। तो और वो प्रोजेक्टर पे था, तो वॉल के ऊपर उन्होंने मुझे अपना लेक्चर दिखाया जो उस दिन था 27 को और शिलोंग में। और ही वांटेड माय ओपिनियन। वो ओपिनियंस ज़रूर लेते थे कि व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दिस लेक्चर। वो एग्री करें या ना करें, दैट इज़ डिफरेंट। एंड द लेक्चर का टॉपिक था हाउ टू मेक दिस प्लेनेट अर्थ मोर लिवेबल। दैट वाज द टॉपिक ऑफ लेक्चर व्हिच ही कुड नॉट डिलीवर। सर, जब उनका पार्थिव शरीर लाया गया, असम से वापस आए और उनके ऑफिशियल रेजिडेंस में रखा गया, तो एक तांता था, मुझे याद है, कई दिनों तक
लगातार क्यूज थी लंबी लंबी। यस यस। उनकी आप लेगेसी क्या देखते हैं, और क्या इज ही वन सिंगल पर्सन हु could have influenced you the most in your life? To me? Yes. Yeah, he has influenced me quite a lot. Definitely true. And I had a good fortune of working with him for 5 years. I never forget even a minute of those 5 years. That was a very golden period. Though I have worked in many departments and organizations, but that is the most valuable asset with me, which I will remember throughout my life. सर, आप हमारे न्यूज़ रूम में आए, हमारी पूरी टीम के साथ इंटरेक्ट किया और एक बहुत ही शानदार आपने टॉक दी. इट वाज वेरी हाईली इंफॉर्मेटिव. वी आर रियली वेरी ऑनर्ड टू हैव यू हियर एंड वी हैव लर्नड सो मच अबाउट द लेजेंडरी मैन फ्रॉम यू. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. I'm really very happy to share whatever I could learn from Dr. Kalam, and that too when tomorrow we are having his death anniversary, and it is going to be now 8 years since he departed from this world.